थिला कोठेटा हैशटैग हे गला ओके शुभंकर सुहानी हेलो सर हेलो गुड इवनिंग चलो लेट्स स्टार्ट द लॉ फ्रॉम बलांगीर रुह सार को टिके रेस्ट को दियो ओके तो जनरली जो पिला माने इंटरेस्टेड अछंती बीड एंट्रेंस 2024 बा जो माने हमरो दैट इज स्टेट रो बीडी पाई इंटरेस्टेड अछंती एंड बीड पाई से माने स्पेशली प्रिपरेशन करछंती तो हमरो विद्यासागर क्लासेस तरफ रु केवल एक्सक्लूसिवली दैट इज बीडी फॉर हमरो प्रिपरेशन करा जाउची एंड ऑलरेडी बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पे चली जो पिला माने इंटरेस्टेड अछो तो से माने दैट इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो लिंक प्रोवाइड करिवो सेतिरे तमे तमरो फिल अप करिवो दैट इज तमरो एड्रेस दबो देन जॉइन हे परिवो ओयूट रे जनरली मेरिट लिस्ट ओके आमे अछु थैंक यू ऑल ऑफ यू तो स्टार्ट करिया एंड बेसिकली चैप्टर रहइबो सेल ठीक अछि आमे दैट इज कंप्लीटली सब चैप्टर तो डिस्कशन करिया नहीं बट बेसिकली आमे सेल को डिस्कशन करिया एंड सेल को नेकी इधर उधर क्वेश्चन भी डिस्कशन करिया चलो तो 46 वाचिंग आउ सब पिला कोडा गले सोई पले घंटा करे संग संग टायर्ड ना चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन what is the specialized differentiation form of cell membrane strictly मन रखिया that is cell membrane रो कोटा होची गोटे आमे कहि परा कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन को कोन कहा जाय जनरली प्रोकैरियोटिक सेल रे that is plasma membrane suppose this one the cell wall and this one is the plasma membrane तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन को हमें कोन कहा जाय मेसोसोम ना प्लाज्मिड ना न्यूक्लियोसोम को कोन हबो मेसोसोम परफेक्ट दैट इज मेसोसोम स्ट्रिक्टली मन रखिबो सेल मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन दैट इज मेसोसोम एंड वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज मेसोसोम स्ट्रिक्टली मन रखिबो ऑलरेडी बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन पचारची दैट इज मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइरोसन शुभंकर बहुत एग्जाम रे पचारची दैट इज मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो दैट इज मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and it is the most important characteristic feature of prokaryotic cell and very important मन रखियो what are the function of mesosome रो बैक्टीरिया रे कोन फंक्शन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रे मेंशन कराई छी दैट इज फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन करे भी हेल्प करियो मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन करे भी हेल्प करियो सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल एंड सिक्रेशन एंड ये सब कंप्लीटली प्रोसीजर रे हेल्प करियो दैट इज मेसोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एंड व्हाट इज प्लाज्मिड एनीवन व्हाट इज प्लाज्मिड ता कोन व्हाट इज प्लाज्मिड को एनीवन प्लाज्मिड कोन व्हाट इज प्लाज्मिड कोन डाउट ठीक अछि त मो बुझी देबी बाकी जेहेतु एटा टॉपिक दैट इज फॉर बीडी एंड आल्सो हम सेल चैप्टर करछे तो जहा डाउट तुम कमेंट करो देन मु त बुझी देबी ठीक अछि बुझिली आशीष देखिली तुम कमेंट प्यूरिन एंड पिरिमिड स्ट्रक्चर विषय डोंट वरी व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन रो डिफरेंशिएशन फॉर्म हम मेसोसोम पढिले बट व्हाट इज प्लाज्मिड मन रखियो बैक्टीरिया रो दैट इज गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थाए बा निजरो क्रोमोसोम को छाडी करी बैक्टीरिया पाखरे गोटे एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए थाए जहाँ को हमें प्लाज्मिड बोली कहूचे वेरी इंपोर्टेंट प्लाज्मिड को वेक्टर रूपे यूज करा जाए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस रे स्ट्रिक्टली मन रखिबो प्लाज्मिड को जनरली प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया लिपिका परफेक्ट आशीष देखिल तुम क्वेश्चन विजयलक्ष्मी सुवर्णा अंकिता श्रद्धा किटू साइरोसन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए रेडी परफेक्ट देन मते एठी गोटे को जनरली जदि हमें कहिया जो भाइरस टा जनरली भाइरस जे कि प्लांट मान को अफेक्ट करे
तो सेमानकर जेनेटिक मटेरियल कौन द भाइरस व्हिच अफेक्ट द प्लांट जेनेटिक मटेरियल कौन ऑप्शन दउची सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो भाइरस टा प्लांट मानको अफेक्ट करे सेमानकर जेनेटिक मटेरियल कौन सारे बीड सिलेबस रो ओम प्रकाश बीड सिलेबस रो इंपोर्टेंट टॉपिक होची सेल होची तमरो इंपोर्टेंट इकोसिस्टम होची तमरो इंपोर्टेंट न्यूट्रिशन तमरो इंपोर्टेंट देन एक्सक्रीशन इंपोर्टेंट एनिमल किंगडम बा जोटा डाइवर्सिटी बोली कोची इंपोर्टेंट फंजी रिलेटेड क्वेश्चन आसे ठीक अछि ए सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए द भाइरस व्हिच अफेक्ट द प्लांट्स सेमानकर जनरली जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो भाइरस गुडा को एनिमल मानको अफेक्टेड करती सेमानकर जेनेटिक मटेरियल आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो जहां भी हेई परियो सिंगल स्टैंडर्ड हेई परियो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर जो भाइरस माने एनिमल माने अफेक्ट करछन और जो भाइरस माने दैट इज बैक्टीरिया को अफेक्ट करती सेमानकर जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आको भितर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैग ऑफ सेल काहा को जाय सुइसाइडल बैग ऑफ सेल काहा को जाय सुइसाइडल बैग टा काहा को जाय व्हिच इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैग काहा को जाय सुइसाइडल बैग कोविड-19 दैट इज जो भाइरस टा एनिमल अफेक्ट करियो सेमानकर आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो कोविड-19 नो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन ला दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टार कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल देन मते को कि दैट इज द लाइसोसोम जो देखिबा जो सेल ऑर्गेनेली तो दैट इज पीएच केते एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच चलो कौन हबो लाइसोसोम साइरोसन शुभंकर सुहानी ऋतुपर्णा शुभंकर दैट इज एसिडिक पीएच नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल इन द प्रोकैरियोटिक सेल रे सबुठारु एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टा कोटा which structure is the external in case of prokaryotic cell one of the most important and one of the most unique question जदि कहया that is hydrolytic acid ready perfect acidic pH तो को acidic pH बढ़िया तो मते को कि that is what external to cell wall suppose this is the prokaryotic cell हमें prokaryotic रे एग्जांपल नबा कहार नबा suppose हमें एग्जांपल नबा शुभंकर तो नहीं सरचे suppose हमें एग्जांपल नले आर पृष्ठी फॉर एग्जांपल आर पृष्ठी दिस इज ए बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल तो देन बैक्टीरिया सेल में जानि छे सबुठारो आउटर लेयर को कहा जाय कोन दैट इज ग्लाइकोकालिक्स देन तापर होची देखा जिवो फॉलोड बाय सेल वॉल देन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जनरली बैक्टीरिया सेल रो सबुठारो आउटर होची ग्लाइकोकालिक्स देन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ग्लाइकोकालिक्स सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए तीनटा स्ट्रक्चर को मिसै करी हमें कहि परिया सेल एनवेलप बोली कहि परिबा ठीक अछि व्हाट इज सेल एनवेलप जोटा तीनटा लेयर को नेकी ग्लाइकोकालिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफेक्ट द एक्सटर्नल दैट इज ग्लाइकोकालिक्स तो मते को ग्लाइकोकालिक्स टा जदि लूज बा जदि इफ द ग्लाइकोकालिक्स जो आउटर लेयर टा लूजली अटैच बा लूजली जदि प्रेजेंट थिबो दैट इज कॉल्ड एज कोन को जाय लूजली कोन को जाय एंड जतोले ठीक और टफ थिबो बा जनरली बहुत हार्ड थिबो तो सेते बेले हम ग्लाइकोकालिक्स कोन को जाय ग्लाइकोलिस दीटा फॉर्म में देखा जिवो आइदर लूजली प्रेजेंट थिबो नॉट थिकली प्रेजेंट थिबो ठीक और टफ तो लूजली जतोले प्रेजेंट थिबो ताको हम कोन कहया को कार आंसर आसीबो विजयलक्ष्मी सेल एनवेलप परफेक्ट विजयलक्ष्मी ग्लाइकोकालिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल स्लाइम लेयर जतोले लूजली दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर आ जतोले थिक और टफ देखा जिवो दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल रेडी स्ट्रिक्टली मन रखिबो थिक कैप्सूल बढ़िया लिपिका स्टान वाइटी रेडी
sir, glycocalyx pseudo layer cell alveol plasma membrane is called as the cell membrane. ठीक ଅଛି pseudo layer right, and cell wall and plasma membrane is called as cell wall. Perfect. Glycocalyx followed by cell wall, then the plasma membrane. These are called as the cell envelope. Hello Sai Ruson Shraddha Kitu. And ଯେତେବେଳେ glycocalyx ଟା loosely that is when the glycocalyx is loose it is called as slime layer, and when the glycocalyx is thick at the top it is called as capsule. Good evening sir, Pratyasha Vishwal. Good evening friends, I am a new student, so welcome to Pratyasha. Okay, next question jiba. Chalo, select the incorrect statement. Glycocalyx differs in composition and thickness among the different bacteria. ठीक है ना भूल? All organisms are made up of cells or aggregate of cells. Endoplasmic reticulum helps in synthesis of protein, lipoprotein and glycogen. Cells of all living organisms have nucleus. कोटा इनकरेक्ट पचार बढ़िया से पढ़ एंड बढ़िया से आंसर दियो, जमा तरबर कि क्या देखिए आंसर दियोनी, निजे पढ़ भल से तापर आंसर दियो. थिक एंड टॉप इज कॉल्ड एज कैप्सूल. शुभंकर रेडी हैला, एंड मन रखिबो दैट इज सेल एनवलप बा ग्लाइकोकालिस, एडा जो प्रोकैरियोटिक सेल रे ही देखा जाए. नेक्स्ट को श्रीतम आंसर दियो कोन बार. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सबले जेते तुम क्वेश्चन पढो न तो सबले माइंड रे तुम स्ट्रिक्टली भल से देखि पढियो दैट इज क्वेश्चन करेक्ट पचाछि ना इनकरेक्ट पचाछि. बहुत सारा पिला कोन करती ना जनरली करेक्ट पचारथिबो इनकरेक्ट मारि के आसीबे, इनकरेक्ट पचारथिबो करेक्ट मारि के आसीबे. दीज आर कॉल्ड एज अ सिली मिस्टेक. तो तुम देखिबोनी क्वेश्चन को भल से करेक्ट पचाछि के इनकरेक्ट पचाछि देन तुम दैट इज भूल भाल करि के आसीबो. तो स्ट्रिक्टली सबले मन रखिबो करेक्ट इनकरेक्ट देखिबो तापर जे कि आंसर दबो. कोन बा आंसर डी. तो देखो ग्लाइकोकालिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया. डिफरेंट बैक्टीरिया ग्लाइकोकालिक्स रो कंपोजिशन डिफरेंट. को बैक्टीरिया लूज शीट आकार थिबो ताको हम स्लाइम लेयर कहया, को बैक्टीरिया थिक एट टॉप थिबो ताको हम कैप्सूल बोली कहया. तो ठीक अछि परफेक्ट. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. हम जानि छे ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन. ठीक अछि रेडी. सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल दिस इज ऑल टा होछि एटी भूल. दैट इज सेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल माने कर दैट इज द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट न्यूक्लियस इज दैट इज primitive nucleus. लक्ष्मी प्रिया गुड इवनिंग सर, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. ओके वेलकम टू लक्ष्मी प्रिया प्रधान. ओके तो मते को कि दैट इज सेल थ्योरी के डिस्कवर करथिले. सेल थ्योरी को दी जण महापुरुष थिले दैट इज जे कि सेल थ्योरी देथिले. हु आर द टू साइंटिस्ट हु गेव द सेल थ्योरी? ऑप्शन दोची रुडोल्फ विर्चो ना स्केल्डन एंड स्क्वान ना एंटन वॉन लियोनॉक एंड रॉबर्ट हुक. किए दैट इज सेल थ्योरी देथिले? 63 वाचिंग. अंकिता डी स्केल्डन एंड स्क्वाम सुवर्णा पत्री राइट. स्केल्डन एंड स्क्वान दी जण साइंटिस्ट जे कि सेल थ्योरी देथिले. एंड सेल थ्योरी से कोन कहिथिले दैट इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल को नै कि तयारी एंड सेल रु तयारी. हमें माने भी सिंगल सेल रु तयारी. दैट इज हम जेतोले स्पर्म एंड ओवम रो फ्यूज हुए बा फर्टिलाइजेशन हुए गोटे सिंगल सेल जाइगोट फॉर्मेशन हुए. देन सिंगल सेल जाइगोट रो हम गोटे मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड बॉडी दैट इज फॉर्मेशन हेइसे. सो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. हम माने सेल को नै कि तयारी एंड सेल रु तयारी दैट इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, who scientist that is cell theory को modify करथिले? Who was the scientist who modified the cell theory? Cell theory को modify किए करथिले? ऑप्शन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो. किए सेल थ्योरी को मॉडिफाई करथिले? स्केल्डन एंड स्क्वान. परफेक्ट. राकेश, लक्ष्मी, अर्चिता, ऐश्वर्या रेडी. किए सेल थ्योरी को मॉडिफाई करथिले बा जा को हमें कहउछे ओमनी सेलुला ई सेलुला. ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल. प्रत्येक सेल तार पूर्व सेल रु क्रिएट हे जे. एटा किए कहिथिले? रुडोल्फ विर्चो. परफेक्ट. रुडोल्फ विर्चो. देन मते नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? शोभारानी, लक्ष्मी, रॉबर्ट ब्राउन. रेडी परफेक्ट. एंड ऑलरेडी हम एबे क्वेश्चन करछले ताले मते को ए क्वेश्चन टा शोभारानी एंड शुभंकर को कि in mitochondria in which layer, outer membrane or inner membrane, in which layer that is the electron transfer chain or oxidative phosphorylation takes place? In which layer, outer membrane or inner membrane, that is the electron transfer chain occurs? Robert Brown,
रेडी समस्त आंसर रॉबर्ट ब्राउन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मन पड़ला कोन क्वेश्चन पचारली कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तापरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गायत्री सुहानी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन which cell is important for the study of plasma membrane जदि तुम क्वेश्चन पचारे जीवो दैट इज ऑप्शन देछि लिवर सेल किडनी सेल एंड आरबीसी which cell is most important for the study of plasma membrane रो स्टडी करिया पे को सेल टा होछि जनरली इंपोर्टेंट को सेल टा होछि दैट इज सुटेबल कोन आंसर बढ़िया अछि समस्तिंकर इनर मेम्ब्रेन गेमोट्स चिकुन मोनाली आंसर दियो दैट इज which cell is important or which cell is suitable for the study of plasma membrane तो plasma membrane रो स्टडी करिया पई जनरली को सेल टा होची इंपोर्टेंट कोन हो आंसर आरबीसी परफेक्ट आरबीसी स्ट्रिक्टली मन रखिबो आरबीसी इज इंपोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मते को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे दैट इज लिपिड रो बाइलेयर देखा जाय ना प्रोटीन रो बाइलेयर देखा जाय फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सपोज कहार बाइलेयर देखा जाए लिपिड रो बाइलेयर ना प्रोटीन रो बाइलेयर आंसर इज दैट इज लिपिड बाइलेयर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लिपिड जनरली लिपिड होची फॉस्फोलिपिड स्ट्रिक्टली मन रखिबो लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मो सेकंड क्वेश्चन गोटे लिपिड रो हेड पार्ट थाए एंड अनदर वन इज टेल पार्ट तो क्वेश्चन को कि कोटा पोलर पार्ट एंड कोटा नॉन पोलर पार्ट दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर तो लिपिड रे गोटे हेड पार्ट अछि सपोज ये गोटे लिपिड ठीक अछि एंड लिपिड इज वाचिंग यू तो लिपिड रो बाइलेयर दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द लिपिड एंड दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द लिपिड ए बला बाइलेयर ऊपर गोटे लेयर लेयर नंबर 1 सपोज एटा अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लेयर नंबर 1 एंड एटा अछि लेयर नंबर 2 तो क्वेश्चन होछि लिपिड रो गोटे हेड पार्ट अछि टेल पार्ट अछि तो व्हिच वन इज द पोलर हेड पार्ट और टेल पार्ट हेड इज पोलर परफेक्ट silent shiva perfect that is silent shiva that is polar head is the polar part and tail is the non polar part strictly मन रखिबो and कोटा होचे हाइड्रोफिलिक एंड कोटा हाइड्रोफोबिक हेड एंड टेल भितर कोटा हाइड्रोफिलिक कोटा हाइड्रोफोबिक कोटा होचे हाइड्रोफिलिक एंड कोटा होचे हाइड्रोफोबिक कोन आंसर पोलर हेड नॉन पोलर टेल बढ़िया अंकिता स्वाति सौम्यश्री सुहानी शर्मिष्ठा सरोज बढ़िया हेड हाइड्रोफिलिक टा होची हेड पार्ट टा जनरली हेड इज हाइड्रोफिलिक हेड होची दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक आमे कहि परिबा दैट इज द लिपिड बाइलेयर रे पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द नॉन पोलर टेल towards the inner side tail ta inner side re and head ta upper side and the hydrophobic tail and the hydrophilic head ready head is hydrophilic and tail is hydrophobic perfect then now scientist roila kono na that is ame kahi periya okay next question jiva what is the external to the plasma membrane in the prokaryotic cells like bacteria ए क्वेश्चन हम तो कले हेबे तो छोटो एडवर्टाइज तुम पई दैट इज ओयूटी तो पिला तुम जानि छ दैट इज ऑफलाइन पई 6000 ये छि ऑनलाइन पई 3000 ओके व्हाट इज एक्सटर्नल ग्लाइकोकालिस लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया व्हाट इज एक्सटर्नल टू हां एटा क्वेश्चन बढ़िया देखो क्वेश्चन जमा रिपीट हेनी ए क्वेश्चन जमा बिल्कुल रिपीट हेनी क्वेश्चन को पढ़ो तो भाबियोनी कि फर्स्ट क्वेश्चन से एटा रिपीट हेछि बोली व्हाट इज एक्सटर्नल टू ग्लाइकोकालिस लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया कहार देखि आंसर ठीक हबो को कौन हबो आशीष ओम प्रकाश सरोज श्वेता प्रज्ञा सेल वॉल श्वेता क्वेश्चन टाको पढ़ो बोलसे पचार कि बैक्टीरिया सेल रे ग्लाइकोकालिक्स रो एक्सटर्नल लेयर कोन हम तो जानि छे दैट इज बैक्टीरिया रो तो बेसिकली जदि हम बैक्टीरिया रे देखिया तो सबुठारो आउटर टा होची कोन सपोज दिस इज द बैक्टीरिया एंड सबुठारो आउटर वॉल टा होची दैट इज ग्लाइकोकालिक्स रो एक्सटर्नल आ किछि नाही तो नॉन ऑफ दिस ग्लाइकोकालिक्स आउटर देन होची सेल वॉल देन होची दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तीनटा लेयर को नेकरी कहआ जाय सेल एनवेलप
and a cell involved of is the characteristic feature of prokaryotic हेले देखो पचार कि एक्सटर्नल टू ग्लाइकोकालिक्स ग्लाइकोकालिक्स रो ग्लाइकोकालिक्स तो एक्सटर्नल ना सब आउटर लेयर तो तार एक्सटर्नल पुनी कोन नन ऑफ दिस विजयलक्ष्मी लक्ष्मी राकेश श्रीतम लक्ष्मी नेम ओडिया की 100% लक्ष्मी माँ लक्ष्मी तो ऑब्वियसली ओडिया ग्लाइकोकालिक सेलुलर प्लाज्मा रेडी श्वेत प्रज्ञा यस सर रेडी तो ग्लाइकोकालिक्स टा होची सबुठार एक्सटर्नल ताठर एक्सटर्नल नाही चलो नेक्स्ट व्हाट इज एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू ग्लाइकोकालिक्स लेयर बढ़िया दैट इज कोटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटर्नल एंड ग्लाइकोकालिक्स रो इंटरनल को हेबे को कोन हबो ऑलरेडी क्वेश्चन को हम बहुत रे डिस्कशन करलेनी ताले कोन हबो ओम प्रकाश नन ऑफ दिस okay कोन हबो देन आंसर दैट इज बी सेलुलर हम जानि छे दैट इज आउटर होची ग्लाइकोकालिक्स देन सेलुलर देन प्लाज्मा तो मझिरे होची सेलुलर चलो नेक्स्ट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को बेसिस रे दैट इज बैक्टीरिया माने को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोली क्लासिफाई करा होची सेलुलर बेसिस रे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिस रे ना ग्लाइकोकालिक्स लेयर बेसिस रे कोन हबो सेलुलर ठीक अछि ए क्वेश्चन आंसर दियो गेमर्स चिकुन सुहानी ओम प्रकाश शुभलक्ष्मी हैप्पी रेनी डे सर श्रद्धा किटू सेम टू यू लक्ष्मी प्रिया सेलुलर साइलेंट शिवा बी सुहानी सेलुलर ए क्वेश्चन आंसर दियो दैट इज क्वेश्चन पचाले कि को बेसिस रे हमें जनरली what basis of the classification of bacteria into gram positive and gram negative को basis रे हम generally bacteria मन को gram positive and gram negative रे ये करछे that is cell wall चलो next question glycocalyx layer ना cell wall केमती that is glycocalyx basis रे next a bacteria cell was taken and the gram staining was done observed that it did not take up the gram stain such as देखो स्टेनिंग प्रोसीजर जनरली कोन करा जाय जो माने दैट इज ग्रेजुएशन लेवल रे स्टेनिंग प्रोसीजर करा जाय जनरली गोटे बैक्टीरिया सपोज गोटे दही अछि एंड दही रो किछि बैक्टीरिया अनाला जेमति लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो हम जानि गोटे ग्लास स्लाइड तो ग्लास स्लाइड रे जो बैक्टीरिया रो जो दहीटा को अना गला आको गोटे स्मियर भलिया एमति पक्का गला माने बोळा गला से काचरे पूरा कंप्लीटली आको एमति बोळा गला देन बोला गला परे आकु जदी काचर रही गला परे दहीटा को रही गला माने ता भीतर बैक्टीरिया भी रहिले तो जनरली आकु दैट इज एयर रे बहुत समय पते सुखा जीवो सुखा गला परे कोन हबो दैट इज आ ऊपर गोटे स्टेनिंग रे गोटे दैट इज गोटे सॉल्यूशन पडिबो दैट इज वायलेट कलर रो कि माने अल्कोहल रो सॉल्यूशन पडिबो देन एक्सेस स्टेनिंग को धोया पई दैट एक्सेस स्टेन को रिलीज करा पई धुआ हे जीवो देन धुआ गला परे तार भीतर स्टेनिंग पका जीवो देखा जीवो कि किछि बैक्टीरिया उडा कलर शो करछन एंड किछि बैक्टीरिया उडा कलर शो करूनाथि तो जनरली को बैक्टीरिया उडा का कलर शो करदिनी ग्राम पॉजिटिव ना ग्राम नेगेटिव तो कोन हबो ग्राम नेगेटिव परफेक्ट तो जनरली देखा गला कोन कहलो किछि बैक्टीरिया अछंती जो बैक्टीरिया मानकर आउटर लेयर कोन ग्लाइकोकालिक्स तो ग्लाइकोकालिक्स रो सपोज ये होची ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो आउटर लेयर कोन ग्लाइकोकालिक्स तो ग्लाइकोकालिक्स रो बाहर से माने गोटे लिपोपॉलीसैकेराइड रो गोटे लेयर फॉर्मेशन कर दी छंती जा फल कि जेतबेले स्टेनिंग प्रोसीजर कराई छै एंड तापर कोनोसी सॉल्यूशन पकाई छी तो जनरली ए सॉल्यूशन टा कहा ऊपर पड़ी छी आउटर लेयर टा की लिपोपॉलीसैकेराइड रो लेयर टा जो फॉर्मेशन हे छी तार ऊपर पड़ी छी एंड जेतबेले को धुआ ही जाई छी तो लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर टा ही धोई ही जाई छी जा फल कलर शो करिनी बट जेतबेले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखा गला तो ताको चारिपटे कोनोसी लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर नाही ताकर चारिपटे ग्लाइकोकालिक्स ही अछि ग्लाइकोकालिक्स परे आ कोनोसी लेयर फॉर्मेशन हेइनी तो जनरली जहां स्टेनिंग कराइतो तो कहा ऊपर पड़तो ग्लाइकोकालिक्स ऊपर तो ग्लाइको जेतो धुआ हितो ग्लाइकोकालिक्स सब धोई ही जीवन ना से लेयर टा बट ए लेयर टा धोई ही जीवो लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर टा जनरली धोई ही जीवो बट ग्लाइकोकालिक्स टा जनरली धोई होबनी सो दैट एटा कलर शो करूची आ जहा हम ग्राम पॉजिटिव बोली कहूचे आ एटा कलर शो करूनी ठीक अछि एटा होची तार कांसेप्ट तो ग्राम नेगेटिव जनरली कोनोसी कलर शो करे नाही नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू को स्टेटमेंट टा होची जनरली नॉट ट्रू
Response to gram stain is due to the cell envelope. The cell envelope act as the single protective unit. The glycocalyx layer is similar. देखो स्ट्रिक्टली मन रखिबो ये जो क्वेश्चन टा नथिला दैट इज को बेसिस रे बैक्टीरिया मानको को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कराउछि तो आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल ऑफ दिस हबो एंगना सेल एनवेलप बेसिस रे ग्लाइकोकालिक सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नेक्स्ट देखो एटा 10 नंबर सर ग्राम नेगेटिव परफेक्ट दीप्ति विजयलक्ष्मी ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर रेडी तो जनरली डिफरेंट कलर को नहीं चूज करा जाए एमते नाही कि लैबोरेटरी केवल पर्पल कलर सार आज ऑनलाइन क्लास 100% हबो तुम तो 8 अछि ना तो हबो ठीक अछि ताले एटा को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू देखो बढ़िया क्वेश्चन ये तो रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन ड्यू टू द सेल एनवेलप ठीक अछि एंड ये जो साइंटिस्ट करनथिले ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर टा ताको नाटा होछि ग्राम बोली साइंटिस्ट को ना अनुसार जो स्टेनिंग प्रोसीजर को ग्राम बोली कुआ होछि ठीक अछि तो ग्राम नामक साइंटिस्ट स्टेनिंग प्रोसीजर करथिले सो दैट हमको ग्राम स्टेन बोली कुआ होछि द सेल एनवेलप act as a single protective unit ठीक अछि the glycocalyx layer is similar in all bacteria this is bull all bacteria रे थोड़ी glycocalyx टा similar के जनकर ठीक आंसर सी साइलेंट शिवा श्वेता प्रज्ञा सुहानी लक्ष्मी प्रिया सारा जो ऑनलाइन क्लास 100% ऑनलाइन क्लास हबो अंकिता सी गायत्री सी सर मु कहिथिले ऑल आर पृष्टि रेडी ऑल सेटा ऑल हैला शुभ लक्ष्मी सुहानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज varies in all bacteria देवदत्त राइट that is glycocalyx टा जनरली सब बैक्टीरिया मन केस रे vary करे ओके 61 वाचिंग ओके बढ़िया ठीक अछि समस्त आंसर रेडी तापर नेक्स्ट a loose sheath of a glycocalyx layer is called loose sheath of a glycocalyx layer is called कोन हो ग्लाइकोटा loose sheath को आंसर को ता तळे मोटे क्वेश्चन लेगुछि or the attachment of bacteria which one is responsible option 1 cilia option 2 fimbriae option 3 flagella which one is responsible for the attachment of the bacteria को कोन हबो आंसर that is slime layer perfect slime layer ready a question answer दियो for the attachment of the bacteria which one is responsible cilia flagella fimbriae कोन हबो अंकिता श्वेता प्रज्ञा सिकी शुभलक्ष्मी निहारिका विजयलक्ष्मी स्टान वाईटी बिंदु लक्ष्मी फिम्ब्रियाई ऑलरेडी हम पढ़ी छे हला सिलिया फ्लैजेला पिली फिम्ब्रियाई माने सब बैक्टीरिया सरफेस स्ट्रक्चर बट स्ट्रिक्टली मन रखिबो दैट इज पिली एंड फिम्ब्रियाई व्हिच डू नॉट एनी रोल इन मोटिलिटी बा मूवमेंट रे पिली फिम्ब्रियाई रे कोनोसी काम न थाए एंड जनरली पिली रो काम कोन फिम्ब्रियाई रो काम तो होस्ट बॉडी पिली रो काम कोन सपोज दिस इज द मेल बैक्टीरिया एंड दिस इज द फीमेल बैक्टीरिया सपोज दिस इज द फीमेल बैक्टीरिया एंड दिस इज द मेल बैक्टीरिया तो मेल बैक्टीरिया रे जनरली दैट इज गोटे कहिया पिलीटा प्रेजेंट थाए जहा को हम सेक्स पिली बोली कहि परिया तो जनरली दैट इज बैक्टीरिया मन केस रे तो ट्रू रिप्रोडक्शन देखा जाय नी प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाय तो दैट इज मेल मन केस रे सेक्स पिली देखा जाय एंड फॉर द रिप्रोडक्शन एटा हेल्प करे दैट इज पिली और हम कहि परिया दैट इज पिली फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फिम्ब्रियाई फॉर द अटैचमेंट एंड सिलिया फ्लैजेला दैट इज मूवमेंट रे हेल्प करे and generally flagella and मते को कि next question थिबा आई थिंक what is a thick top capsule तो जो माने तमरो दैट इज बंधु परिजन वर्ग इंटरेस्टेड थिबे दैट इज एनडीए रिलेटेड कोर्स करिया पई तो एनडीए पई भी हमरो विद्यासागर क्लासेस तरफ रु बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रो कोर्स प्रोवाइड कराउची तो दैट इज चलो नेक्स्ट which one of the following is not a function of cell wall सेलुलर रो फंक्शन कोटा नुह को कोन व्हिच इज द नॉट ए फंक्शन ऑफ सेलुलर रो कोटा फंक्शन नुह कोन हबो सिलिया फ्लैजेला को प्रोटीन रे नै को प्रोटीन
जनरली तांकर दैट इज गोटे प्रोटीन था आई थिंक ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन डाइनिन प्रोटीन ये सब प्रोटीन प्रोटीन तैयारी हो ट्यूबुलिन डाइनिन। ओके नेक्स्ट कौन बार आंसर देखि केते मैक्सिमम आंसर कहार आछि मे बी डी। देखो इंटरेक्शन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड जनरली सेलुलर रो काम होई परिबो, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप होई परिबो, प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग होई परिबो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू इट दैट इज हम जे देखिबा सेलुलर द्वारा कोन न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस होछि तो एप्रोप्रिएट लागिबो कोटा रैपिड फायर करबा आई थिंक डी टा होछि इनकरेक्ट, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डी टा होछि इनकरेक्ट बट आउ सब तो जनरली करेक्ट लागुछि तो डी हेबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ मेसोसोम, कोटा होछि मेसोसोम रो फॉर्म बेसिकली ट्यूबुल लामिला ये सब जगह हबो। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मेसोसोम, मेसोसोम रो फंक्शन कोन रैपिड फायर करिया 2 मिनिट अपेक्षा करे क्वेश्चन टा खाली हम सरी दबा तापर रैपिड फायर करिया देन सारिया को कोन आंसर 13 फाइनली आंसर डी रेडी डी 14 टा भी दैट इज डी वेसिकल ट्यूबुल लामिला दीज आर द फॉर्म ऑफ मेसोसोम। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मेसोसोम, सेलुलर फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल all are the function of mesosome both A and B perfect Stan Whitey ready देखो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कोन ना बेले बेले दैट इज हमें देखिचे कि जो वायरस गुडा को जनरली प्लांट मानु अफेक्ट करे सेमानकर जेनेटिक मैटरटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आउ जनरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट इज सो मानो एनिमल अफेक्ट करे आ जो वायरस टा बैक्टीरिया को अफेक्ट करे जा को बैक्टीरिया फेज बोली कहउचे तो सेमानकर दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आउटसाइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्शन करे दे तो बैक्टीरिया तो आउटर लेयर ग्लाइकोकालिक्स तो ग्लाइकोकालिक्स टा इंटरेक्शन करि परियो बोथ ए एंड बी परफेक्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट सेम क्वेश्चन। देखो ई सब जाक काम होची मेसोसोम रो स्ट्रिक्टली मन रखिबो मेसोसोम रो काम होची प्रथम काम दैट इज सेलुलर फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, distribution of a daughter cell, distribution of daughter cell, respiration ये सब जगह एनसीईआरटी लाइन है पूरा डायरेक्टली लिखाई सिक्रेशन प्रोसेस वर्षा हो ना कोन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया वर्षा वर्षा हो बोधे ना वर्षा हो बोधे increase the surface area these are the function of mesosome मन रखियो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइनिंग उडा बडा गले पिला हमरो mesosome राइट दैट इज आंसर होची mesosome परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमाटोफोर्स आर फाउंड बढ़िया क्वेश्चन क्रोमाटोफोर पिगमेंट होची सर साइलेंट शिवा सेवा वर्षा पर जोर से उठेलानी वर्षा हो टिके गरम रो त्राही मिलियो आम आडे नाही वर्षा शुभंकर घर आडे टिके वर्षा पठाओ ओके देन कोन हबो इन व्हिच ऑर्गेनिज्म द पिगमेंट कंटेनिंग क्रोमाटोफोर्स आर फाउंड एल्गी ग्रीन एल्गी सियानोबैक्टीरिया अमोइबा देखो तुम ओयूटी आंसर कोन हबो दैट इज बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया मानो केस रे बा प्रोकैरियोटिक सेल मानो केस रे गोटे पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी थाए जा को हम क्रोमाटोफोर कहउचे एंड स्ट्रिक्टली मन रखियो क्रोमाटोफोर्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड इट बैक्टीरिया की दैट इज सियानोबैक्टीरिया obviously answer कौन होगा cyanobacteria B chromatophores that is pigment containing which is present in the prokaryotic and prokaryotic is cyanobacteria। तापर मते को which bacteria is responsible for the photosynthesis को bacteria टा photosynthetic photosynthetic bacteria किए कौन होबो photosynthetic bacteria ऑप्शन भीतर कोटा को photosynthetic bacteria कोटा cyanobacteria is called as this is the only bacteria which can do photosynthesis strictly मन रखिबो that is cyanobacteria otherwise called as blue green algae तो blue रे कर दो एटा green algae छाड़ो तो cyanobacteria otherwise called as blue green algae which is photosynthetic in nature strictly मन रखिबो this is the most important question voice of Krishna ऋतुपर्णा ओम प्रकाश
सॉरी श्वेतप्रज्ञा, दीप्ति, साइलेंट, रश्मि, गायत्री, लिपिका, शिवानी, सुहानी, शुभंकर, साई रोशन। ओके बढ़िया। प्रोग्रेस सर मु ऑनलाइन क्लास रे केमती जॉइन करिवि? लक्ष्मी प्रिया तमे दैट इज ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करियो मतलब कोर्स एनरोल करिया पे चाहूछो तो जदी कोर्स एनरोल करिया पे चाहूछो सियानोबैक्टर ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफेक्ट। जदी तमे कोर्स एनरोल करिया पे चाहूछो देन तुमको नंबर जोटा भी तुमको ये स्क्रीन रे शो करथिवो सेही नंबर को जनरली तमे कोन करिवो ना से नंबर को तमे कांटेक्ट करो जो नंबर प्रोवाइड कराई छी 9337421183 देन कांटेक्ट करिकि तमे कोर्स जॉइन करिवे आराम से ठीक अछि। सियानोबैक्टेरिया और इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी जे होची फोटोसिंथेटिक नेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin filamentous extension of cell wall required for the bacteria motility. Bacteria रो motility पाई को स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट hook, flagella, tail, mesosome। बढ़िया क्वेश्चन एंड एटा तुमको चुटकी रे आसीबो which structure is important and the cellular extension suppose this is the cell wall bacteria and bacteria suppose this is the cell wall तो cellular रो एम्ति बाहर छि स्ट्रक्चर गुडा को जोटा बैक्टीरिया को मूवमेंट करिया रे हेल्प करछि ताले एट स्ट्रक्चर टा कोन फ्लैजेला ना टेल ना मेसोसोम कोन आंसर परफेक्ट दैट इज फ्लैजेला फ्लैजेला राइट फ्लैजेला बढ़िया। तो मते को दैट इज द मूवमेंट ऑफ ओवम ओवम रो मूवमेंट टा सिलियरी मूवमेंट ना फ्लैजेलर मूवमेंट कारण हम जानि छै फालोपियन ट्यूब रे दैट इज सिलिया इज देयर तो जनरली ओवरी भीतर जो सेकेंडरी ऊसाइड बाहर तो सिलियाटा जो फालोपियन ट्यूब अछि से होछि सेकेंडरी ऊसाइड को मूवमेंट करे हेल्प करे तो सिलियरी मूवमेंट स्पर्म रो मूवमेंट फ्लैजेलर मूवमेंट मन रखिबो द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज फ्लैजेलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन तम पई दैट इज स्पर्म रो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म रो सपोज तो दिस इज द हेड तो मते को कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन हेड और मिडिल और टेल दिस इज द हेड दिस इज वन इज द मिडिल and this one is the tail तो जनरली मते को कि न्यूक्लियस टा स्पर्म रो कोड थाए ट्री के होची NH न्यूक्लियस टा हेड रे थाए एंड माइटोकॉन्ड्रिया टा मिडिल रे थाए एटा मिडिल पीस रे माइटोकॉन्ड्रिया MM मिडिल पीस रे माइटोकॉन्ड्रिया NH16 न्यूक्लियस टा प्रेजेंट इन हेड राइट परफेक्ट समस्त को बढ़िया। लक्ष्मी साइलेशिवा गायत्री आर पृष्टि विजयलक्ष्मी साई रोशन इप्सिता ऋतुपर्णा श्वेतप्रज्ञा विजयलक्ष्मी सुहानी रोशन बढ़िया रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट केतरा दीटा क्वेश्चन ना ओके तो कहो कि दैट इज फ्लैजेला रो सबुठार लॉन्गेस्ट पार्ट कोटा ऑल ऑफ द पार्ट व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजेला दैट इज फ्लैजेला रो सबुठार लॉन्गेस्ट पार्ट कोटा स्ट्रिक्टली मन रखिबो जो फ्लैजेला में पढ़ी लेबे फ्लैजेलाटा जोटा सेल वॉल रो बाहर छि बैक्टीरिया को मूवमेंट करे हेल्प करे तो फ्लैजेला रो तीनटा पार्ट गोटे होची दैट इज फिलामेंट and another one is hook and another one is basal body filament hook basal body ये होची बैक्टीरिया रो फ्लैजेला रो स्ट्रक्चर बट आंक भितरु कोउटा होची दैट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन क्वेश्चन पचारछि कोन हबो टेल पार्ट फ्लैजेला रेडी फिलामेंट तो आंसर समस्ती करो दैट इज फिलामेंट फिलामेंट एटा बा व्हिच ऑफ द नॉट ए पार्ट ऑफ हां एटा छाडी देले की ठीक अछि तो दैट इज आंसर होची यार फिलामेंट तो 20 नंबर पचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम फिलामेंट हुक बासाल बॉडी ये होची फ्लैजेलर पार्ट आ कोटा नॉट पार्ट पचरछि जाहाउ त माने एंड केते डेडिकेशन रे एते समय पर्यंत क्वेश्चन आंसर दोचो गोटे जगह रे बसी के एंड मु ए क्वेश्चन छाडी करी भी तुमको बहुत सारा क्वेश्चन पचरछि एंड सब क्वेश्चन तुम परफेक्टली आंसर दोचो सो निहात रूपे तुम परिश्रम करछो एंड 100% सक्सेस मिलिवो तो जो माने जो एग्जाम पई भी प्रिपरेशन करछंती देखो बॉटनी सर गोटे कथा कहितले दैट इज ऑल द क्वेश्चंस जो एग्जाम रो जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन सब पई क्वेश्चन तो जनरली तुमको मो जॉइन करे ये रीजन थिला कि तुम माने सेल चैप्टर दैट इज सेल थोड़ी ना अलगा गोटे एग्जाम पई सेल रो चैप्टर पाठ अलगा एंड अलगा गोटे एग्जाम रो सेल रो पाठ अलगा तो सबु रो एग्जाम पई पाठ सबल पई समान तो बेसिकली तुम माने दैट इज जो माने हेवी वर्कआउट करछो जो भी एंट्रेंस एग्जाम पई दैट इज फॉर ओयूटी हो और दैट इज फॉर नीट हो और दैट इज फॉर बीईडी हो और फॉर द एनडीए हो और एनी एग्जाम
तो सबू एग्जाम पे आम जहाँ भी जहाँ क्वेश्चन करछे तो डेफिनेटली मु तो ट्राई करी 100% कि तमें जदि से क्वेश्चन सो एते एक्वेटेड हो जाओ कि क्वेश्चन देखु देखु तुमको आसिया दरकार मु सेति पई एवरी क्लास रे तुमको रैपिड फेयर वाले सब पे बार बार से क्वेश्चन को पचारे बहुत थर से क्वेश्चन को बार बार पचारे रीजन है कि तुम बार बार शुणी 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 तुम कान सुहा हो जाए दरकार जोटा कह जाए कि एमती हो कि तुम जनरली क्वेश्चन देखु देखु तुम माइंड रे पसी जाए दरकार तो सेति पई तुमको बार बार रैपिड फायर बढ़िया दैट इज पचारे रीजन एया नहले मु चाहितले तो दैट इज जो चैप्टर हम डिस्कशन करछे से चैप्टर छडा बाहर क्वेश्चन पचारेटा चाहंतिनी तो जनरली एया भी करा जिवो एंड तमरो जेतबेले एग्जाम पाके आसीबो तो कंप्लीटली हमें पूरा होल बायोलॉजी को गोटे रैपिड फायर करिया एंड को चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू आनी हमें डिस्कशन करिया एंड मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन जेमति कि सेही क्वेश्चन को सॉल्व करथिबो एंड सब क्वेश्चन हमरो कवर अप हो जाउथिबो सर ओजे पे थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन डोंट वरी बस तमे खाली फेथ रखो निज ऊपर एंड 100% आम ऊपर फेथ रखो जहाँ भी जहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड करा होची से क्वेश्चन को माइन्यूटली करो जदि जो क्वेश्चन की बुझा न पड़ची से माने दैट इज ताकू तमे अगेन ताकू आउथरे भी कमेंट करो कि सारे क्वेश्चन बुझेलानी कि कोन हेलानी बोली एंड बेले बेले लाइव क्लास रे किछरा क्वेश्चन भी आम तरफ रो हो कि मो तरफ रो हो भी किछ मिस्टेक रे कहि जाय एंड जेहेतु आमे फ्लो रे कहूचे तो किछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक रे दैट इज भूल भी हुए तो जनरली तो से क्वेश्चन दैट इज तमे ताकू रेक्टिफाई करि परिबो एंड जोट भी तमु किछ प्रॉब्लम हैला देन तमे कमेंट रे जणाई परिबो तो ये होची थिला हमर फ्लैजेलर क्वेश्चन एंड आई थिंक तुम समस्त भल लगुवा एंड सब पूरा जोश रे रुह जमा लेजी रे रहा दरकार नहीं पूरा कंप्लीटली जोश रे रुह दैट इज जेमती चिकन मटन खाइला पर जोश तो 100% पूरा जोश रे आसो एंड पूरा ट्राई करो कि क्लास रे हमको जेती क्वेश्चन दिया जीवो एंड मु देखो जदि 15टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे एंड से क्वेश्चन को पचारि पचारि 50टा क्वेश्चन करछे तो स्ट्रिक्टली पूरा माइंड रे पूरा प्रिंट करके आसो कि हमें क्लास जॉइन करूछु माने 100% हमको सब क्वेश्चन आछिया दरकार एंड गोटे टाइम आसीबो देखिबो तुम पूरा प्रो होई जीवो तुमको जो लेवल रो क्वेश्चन पचारे तुम आसीबो एंड तमरो जेहेतु ए जो एग्जाम गुडा को +2 लेवल रो क्वेश्चन तो ए क्वेश्चन तुम बार बार कान रे सुनी कि पानी हो जीवो ठीक अछि रैपिड फेयर हो तो आउ रहिला 7 मिनिट 7 मिनिट भीतर रैपिड फेयर करा जीवो तापर क्लास को एंड करा जीवो तो 20 क्वेश्चन सरी गला 21 क्वेश्चन तुम पई होमवर्क एंड सबु पिला ए होमवर्क रो क्वेश्चन को तमे कमेंट करिवो एंड मु तुम कमेंट देखिबी देन चलो दैट इज हमें रैपिड फेयर करिवा अबोतिक सर ओजे पाई मु तुम कहि देबी डोंट वरी फॉर फेवरेट वन सर गायत्री थैंक यू गायत्री तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो मते को ए जति क्वेश्चन में डिस्कशन करले ता भीतर मते को फिलामेंट हुक बासल बॉडी दीज आर द पार्ट ऑफ पिली फिमरे फ्लैजेला धड़ा धड़ को फिलामेंट हुक बासल बॉडी कहार स्ट्रक्चर पिली फिमरे फ्लैजेला पूरा अलर्ट रो एंड पूरा जोश रे रो 5 मिनिट पूरा भल से रैपिड फायर करिया देन खत्म करिया को फ्लैजेला रेडी तापर मते को नेक्स्ट क्वेश्चन मते को दैट इज मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कटि गला कि हां पिंकू ब्रदर कटि गला कि सरी गला वर्षा मांडो वीडियो आसुनी हबने ना तो शुण समस्ते कौन है कि एक्चुअली टोन आसुबुची शुण तो जनरली ये है कि वीडियो आसु नहीं शिव ओम प्रकाश विजयलक्ष्मी तो जनरली रोशन एडमिट कार्ड के बेस शुण जहाँ भी डाउट तुम कमेंट करो देखो बर्तमान पे दैट इज ऑलरेडी दैट इज हमर कैमरा रो चार्ज सरी गलानी जे तुम कंटीन्यूअसली 2 आवर क्लास करले तो आमे देमु किछ नहीं आपण क्वेश्चन करंतु किछ नहीं हुए आमे एंड देमु ठीक अछि तो जनरली आमे नेक्स्ट क्लास रे जतले न्यू सेशन करिया तो सेतबेला किछ न्यू क्वेश्चन आनी करिया
तो जेहेतु दैट इज हमर ऑलरेडी चार्ज खत्म हे आसलानी एंड तुम माने भी टिके रेस्ट नियो तो पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो एंड नुआ नुआ क्वेश्चन को आनी की ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू कि तमे दैट इज कंटीन्यूअसली एते समय पर्यंत वीडियो को वॉच कलो एंड थैंक यू एंड जो माने दैट इज नुआ अछ एंड जो माने किछटा पिला कर क्वेश्चन थिला कि सर हम केमती केमिति दैट इज आमे जॉइन करिवु विद्यासागर क्लासेस रे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तो जो रिलेटेड रे कोर्स तमे जॉइन करिया पे चाहूछ तो तमरो जो स्क्रीन रे जो तुमको दैट इज नंबर टा तुमको शो करूची सेही नंबर रे तमे कांटेक्ट करिवो एंड जो कोर्स रे तुमको इंटरेस्टेड से कोर्स रे जॉइन करिवो चलो नेक्स्ट टाइम रे देखा हबा सेही पर्यंत टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ जय श्री राम।